Assalamu alaikum everyone. Hope all of you are doing well. Today I'm here, your computer teacher, with the very first online class of your computer subject. So before watching this video, kindly do grab your computer books and notebooks as well and then watch the video. So let's start. Today's topic is GPS Technology Global Positioning System from the chapter Future of Technology. So here are the contents of today's lesson. What is GPS, how does it work, architecture of GPS, timeline and modernization, visual example of 24 satellites of GPS technology, application of GPS, uses of GPS, example of GPS in a vehicle, conclusion, and the very last thing is activity which will be held by you. So here is what is GPS. GPS stands for Global Positioning System. It is a satellite-based navigation system. It means all of the working in GPS system is based on satellite. So they can monitor or trace you from satellite. It does not require user to transmit any data. The user of GPS system technology is not sending any of data to the GPS system, made up of a network of 24 satellites circulating around the Earth orbit. As you know, the Earth is quite wide, so to covering the whole world, they use 24 satellites for GPS system, GPS technology. First, uh, satellite was developed in 1960 to allow ships of US, United States of America, Navy to navigate the oceans. As you know, there are no directions in oceans. How can we ensure that we are moving? So, for that purpose, US Navy introduced the GPS system for oceans to navigate. GPS was originally intended for military application. So, GPS was developed by the American military to guide missiles towards enemy targets. Soldiers can also coordinate their movements on the battleship with the help of GPS devices. Uh, Rescue missions are also use GPS technology to trace the planes that have been shot down, right? So move on the next one. It permits land, sea, and airborne. Airborne means the flying aircrafts. Uses to determine three-dimensional position, velocity. Velocity means the speed of moving any body. um, किस तरह से वो move करते हैं. And the last one is time. So move on the next one. How does it works? Each satellite broadcasts radio signals with their location and time. It means the GPS system broadcasts with the help of radio signals, which normally we use in our radio, right? They are the waves of radio signals. GPS receivers receive radio signals and use these data to calculate its distance from at least 4 satellites. It means कि जब आपको किसी लोकेशन को एग्जैक्टली उसके डिस्टेंस के लिए कैलकुलेट करना है तो एटलीस्ट 4 सैटेलाइट्स आपको ट्रेस करते हैं. Move on the next one. GPS radio signals travel at speed of light. As you know, the waves are moving continuously. Analog signals we read in our previous class as well. तो लाइट की स्पीड से वो मूव करते हैं. Both satellite and receiver generate the same pseudocode signal. Pseudocodes are exactly the similar to the programming languages that codes are working improperly signals. Move to the next one. Architecture of GPS. To run all the system of GPS technology properly, highly advanced architecture of GPS has been developed.
That includes three major segments that are as follows. Space segment. So here you can see there is the satellite in the space. So this segment is the space segment, जहाँ से satellite आपको monitor करता है. The next one is control segment. Control segments are the segments where we have the ground station towers and the servers as well, who communicate between the user segment and the space segment. The last one is user segments, जिसमें हम आ जाते हैं. The user of the GPS technology, they can use the CPU and or any kind of devices which may contain the application of GPS technology. It is the simplest thing. Okay, student, here is the timeline and modernization of the GPS technology satellites. There are the time period of launching the satellites. सक्सेसफुल कितने रह चुके हैं उन सेटेलाइट्स की, ये पूरी की पूरी लिमिट लिखी हुई है. देन यू हैव द लिमिट ऑफ फेलियर सेटेलाइट्स in preparation. So here is the timeline and modernization of satellite GPS technology. जो GPS technology में satellites launch किए गए हैं. The time period of the launching of GPS satellites is over here. How many are successful satellites? Failure of satellites? In preparation, how many are in preparation? In plan, there are 3 in plan. Currently in orbit and healthy working of satellites. It means कि इस वक्त कितनी satellites ऐसे हैं जो GPS technology को healthy serve कर रहे हैं. ठीक है. So here are total successful satellites are 72. 2 failure में हैं. Then you have in preparation 5 are in preparation and 25 are in plan. The last one is total of healthy working जो इस वक्त कर रहे हैं. There are 33, right? So move to the next one. Here is the visual example of 24 satellite. A visual example of a 24 satellite GPS constellation. Constellation means the group of arranged satellites. You can see here, ये देखें कितने सारे satellites हैं और ये properly move कर रहे हैं, revolve कर रहे हैं on their fixed orbit. ठीक है. तो इन मोशन विद द अर्थ रोटेटिंग, और साथ साथ ये आप देख सकते हैं कि अर्थ जो है वो भी रिवॉल्व कर रही है. Notice how the number of satellites in view from given point on the Earth's surface changes. It covers the single one here. It covers the single one location with all of these satellites, and the red satellites are those satellites which at a time trace this one position as the surface of earth is changes. ये आप देख सकते हो, ये एक सिंगल पोजीशन है जो इन सारे ग्रुप ऑफ सैटेलाइट्स में से जब जिस तरह से अर्थ रिवॉल्व करती है, तो ये देखिए जो रेड सैटेलाइट्स हैं वो अपने ऑर्बिट से उस लोकेशन को ट्रैक करते हैं. सो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से विजिबल सैटेलाइट्स जो हैं जो उस लोकेशन की लिमिट को कवर कर रहे हैं, किस तरह से इंक्रीज या डिक्रीज हो जाते हैं. दिस एग्जाम्पल इज इन गोल्डन, कोलोराडो, USA. Application of GPS. Here are the applications of GPS. इन व्हीकल नेविगेशन के लिए कार, बोट और एयरक्राफ्ट में यूज़ किया जाता है. वेदर एंड ट्रैफिक अलर्ट्स में जीपीएस की एप्लीकेशन को यूज़ किया जाता है. वी आल्सो यूज़ जीपीएस इन जियोलॉजिक रिसर्च एंड माइनिंग. मिलिट्री नेविगेशन, इंटेलिजेंस एंड टारगेट लोकेशंस, वेपन एमिंग. मैंने इसको पहले काफ़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है कि बेसिकली इट इज़ डिज़ाइन फॉर द मिलिट्री. So military can easily navigate that how they can aim their weapons, how can they target their locations of enemies, and so on.
मैपिंग एंड सर्विंग, जो सर्वे किए जाते हैं और जो अर्थ के मैप रेडी किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ जीपीएस सैटेलाइट्स और जीपीएस टेक्नोलॉजी। प्रिसीशन एग्रीकल्चर, ओके, जीपीएस सैटेलाइट्स के थ्रू ही यहाँ पर इसको प्रॉपरली प्रिसाइज और एक्यूरेट वे में कि हाउ मच लैंड वी हैव यूज फॉर आवर एग्रीकल्चर फील्ड in our agricultural activity. Precision agriculture. Precision agriculture. So in this, with the help of GPS satellite, they can precisely and accurately check that how much of our land is used for agriculture, right? तो क्योंकि हम लोग उनको वैसे तो मेजरमेंट्स नहीं कर सकते ना उनके, तो सैटेलाइट के थ्रू हम उनको चेक कर लेते हैं कि कितना लैंड ऐसा है जो फर्टाइल है और उसको हम लोग अपने एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं। रोबोटिक्स में यूज़ किया जाता है जीपीएस को, सेल्फ नेविगेशन होती है और कुछ रोबोट्स ऐसे हैं विच आर वर्किंग ऑटोमेटिकली ऑन देयर ओन। Next we have is tectonics. Tectonics are the movements of earth crust, ठीक है, the motion movements of earthquakes। तो जब earthquakes आते हैं तो as you know the earth crust or the earth surface is moving from their own place। तो ये सब कुछ जो movements हैं ये किए जाते हैं जीपीएस टेक्नोलॉजी की हेल्प से। Recreation, geo-caching, waymarking and location-based mobile games। तो रिक्रिएशन में कुछ गेम्स ऐसी हैं जो आपकी रिक्रिएशनल एक्टिविटी में फॉर फाइंडिंग और हाइडिंग सम काइंड ऑफ कंटेनर्स और प्रेजेंट्स नियर बाय, तो ये उसको फाइंड आउट करने के लिए भी जीपीएस को यूज़ किया जाता है। So here are some more applications of GPS technology. Location determining a basic position. Navigation, getting from one location to another. You can also navigate your location with another. Tracking, monitoring the movement of people and things. तो आप लोग अपनी जो लोकेशन है वो शेयर कर सकते हैं या फिर आप मूवमेंट को मॉनिटर कर सकते हैं, या फिर आप अपने थिंग्स को यानी जो आपके लगेज होते हैं या पार्सल होते हैं उनको ट्रेस कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जीपीएस enabled trackers can be attached to valuable items like laptops, luggage and so on. This enables police and airport authorities to track down lost luggage as well. Some people also provide their children with GPS-enabled trackers and attach GPS-enabled trackers to their pets as well. This helps them to locate their children and pets if they get lost. Mapping, creating maps of the world. Timing, bringing precise timing to the world. As you know, every country have a time difference between each and other. So GPS can help to the countries कि किस तरह से कितने डिस्टेंस पे या कितना ट्रैवल करने के बाद जितना टाइम पीरियड होता है उसको जज करके आपको बता सकते हैं कि ये टाइमिंग का डिफरेंस है हमारे पास। आपको पता है कि जो टाइम है उसमें डिफरेंट कंट्रीज में काफ़ी डिफरेंस होता है। So move to the next one. Okay students, here I'm going to discuss the different uses of GPS in different fields. So first of all, it is used in petroleum industry. As we discuss, the different kind of industries use GPS technology in mining। तो पेट्रोल जो होता है वो अर्थ के क्रस्ट यानी अर्थ के नीचे होता है, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज जीपीएस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। देन वी हैव द नेक्स्ट वन इज़ पावर ग्रिड्स। सो जो पावर स्टेशंस हैं और जो पावर
इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज़ हैं वो क्या करती हैं कि डिफरेंट एरियाज़ को कवर करने के लिए डिफरेंट लोकेशंस को फाइंड आउट करती हैं कि किस किस जगह पे किस एरिया में हम लोगों को कौन से वाली प्लेस पे पावर ग्रिड्स को प्लेस करना पड़ेगा ताकि वो प्रॉपरली उस पूरे एरिया को कवर कर सके जहाँ पर उन्हें पावर सप्लाई करनी है। नेक्स्ट वी हैव द स्पेस एप्लीकेशंस। सो आपको पता है कि स्पेस में जीपीएस टेक्नोलॉजी की हेल्प से ही मूवमेंट्स किए जाते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं स्पेस में जिनको ऑपरेट करने के लिए जीपीएस टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल, तो प्लेन्स को और एयरक्राफ्ट को कंट्रोल करने के लिए क्योंकि वो फ्लोट कर रहे होते हैं फ्लाइंग मोड पे, तो आपको पता है कि उसको भी प्रॉपरली मूवमेंट्स और डायरेक्शंस बताने के लिए जीपीएस टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता है। पर्सनल नेविगेशन, आपके फ़ोन में, आपके डिफरेंट डिवाइसेस में, टैब्स में, लैपटॉप्स में लोकेशन जो होती है उसका ऑप्शन आपको प्रोवाइड किया जाता है, तो आप अपनी पर्सनल जो नेविगेशन है उसको जीपीएस टेक्नोलॉजी की हेल्प शेयर कर सकते हैं। ट्रांजिट ऑपरेशंस, इट मींस कि ट्रांसपोर्टेशन जो की जाती है उनमें भी जीपीएस यूज़ किया जाता है कि किस तरह से ट्रांसपोर्ट मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। शिपिंग ऑपरेशंस, ओशंस में डायरेक्शंस को प्रॉपरली जिन प्रॉपर डायरेक्शंस में हम मूव करना चाहते हैं उसी के अकॉर्डिंग मूवमेंट के लिए हम जीपीएस यूज़ करते हैं। इट मीन्स कि जब आप समंदर में होते हैं यानी शिप्स जब समंदर में होती हैं तो वो प्रॉपरली किन डायरेक्शंस में किन डायमेंशंस में मूव करेंगी, तो इसकी हेल्प के लिए जीपीएस टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता है ताकि वो प्रॉपरली उस डायरेक्शन में मूव कर सकें। इमरजेंसी पर्पसेस के लिए भी लोकेशन शेयर की जाती है तो उसके लिए भी जीपीएस को यूज़ किया जाता है। आपने देखा होगा कि डिफरेंट इमरजेंसी जो मूवमेंट्स होती हैं उनके लिए जीपीएस अलर्ट ऑन रहता है कि इस वक्त वो जो हैं कहाँ पे मूव कर रहे हैं, लाइक प्रेसिडेंट होते हैं या फिर जो हमारे डिफरेंट सीएम्स हैं उन सब की मूवमेंट्स इमरजेंसी मूवमेंट्स हो सकती हैं। आपकी एम्बुलेंस की मूवमेंट इमरजेंसी मूवमेंट हो सकती है। नेक्स्ट है आपके पास व्हीकल एंड ट्रैकिंग। सो एज यू नो कि बिजनेस पर्पसेस के लिए इसको यूज़ किया जाता है। Many of businesses can also make use of GPS technology. They can attach GPS devices to trucks carrying cargo. This helps them to keep track on how far the goods have traveled and how efficiently their employees are working. तो आप easily check कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल तो मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दूंगी डीएचएल और टीसीएस की, जहाँ पर उन्होंने अपने जो पार्सल्स हैं जो आप सेंड करते हो कार्गो, तो उनके साथ ट्रैकर्स लगाए होते हैं या वो जो जिन ट्रक्स में या व्हीकल्स में मूव कर रहे होते हैं उनके साथ ट्रैकिंग डिवाइसेस होती हैं, तो आप इजीली ट्रेस कर सकते हो कि इस वक्त आपका पार्सल कहाँ पर प्लेस किया गया है। ठीक है, सो मूविंग next one slide, here is the example of GPS technology. Okay student, here is the example of GPS. The picture below describe the working of GPS tracker in a vehicle. तो यहाँ पर मैं आपको explain करती हूँ कि ये किस तरह से इसकी working principle है। ठीक है, तो here you have the GPS satellite. It is directly sending the GPS signal to the GPS tracker and GPS enabled device, right? तो यहाँ पर जीपीएस ट्रैकर लगा दिया गया है व्हीकल में, सो यू कैन शेयर योर नेविगेशन विद द हेल्प ऑफ जीपीआरएस। जीपीआरएस स्टैंड्स फॉर जर्नल पैकेट रेडियो सर्विस। ठीक है, तो ये सर्विसेज जो आपको मोबाइल फ़ोन कंपनीज शेयर करती हैं, ये जो नेट आपको शेयर करती हैं उन्हें कहा जाता है जर्नल पैकेट रेडियो सर्विस। ठीक है, तो आप उनके थ्रू शेयर कर सकते हो डाटा को। ठीक है, तो आप उनके थ्रू शेयर कर सकते हो अपनी नेविगेशन को। ठीक है, या अपनी लोकेशन को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो वो आपको एसएमएस भी कर दिया जाता है कि इस वक्त आपकी
पोजीशन या आपकी लोकेशन क्या है आपके व्हीकल की, और इसी तरह ये सर्वर को भी सेंड कर दिया जाता है जीपीआरएस के थ्रू। वो कंपनीज जो आपको जीपीएस टेक्नोलॉजी के थ्रू ट्रैकर की यानी ट्रेस करने के लिए आपके व्हीकल को ये सर्विस प्रोवाइड करती है, यानी इंश्योरेंस कंपनीज। ठीक है, कि अगर आपकी व्हीकल गुम जाएगी, लॉस्ट हो जाती है, तो वो आपको रिकवर करके देते हैं। ठीक है, सो server also provide their information on internet as well, so the client easily use with the help of client software which is provided by the server, तो easily वो trace कर सकता है, use कर सकता है GPS टेक्नोलॉजी को, right? So student, at the end of this lecture is the conclusion of GPS. The applications using GPS are constantly growing. ये तकरीबन हर सेक्टर में यूज़ किया जा रहा है, इतना ज़्यादा ये वाइडली स्प्रेड हो चुका है कि इसको टैक्सी कंपनीज यानी उबर और करीम आपकी एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊंगी, यूज़ कर रहे हैं। पेट्स के साथ लोग इसको यूज़ कर रहे हैं ताकि उनको ट्रैक कर सकें। स्टूडेंट्स भी इसको यूज़ कर रहे हैं ताकि वो अपनी लोकेशन शेयर कर सकें। मोर रिलायबल एंड एक्यूरेट मेजरमेंट्स इसके शो किए जाते हैं। आपको पता है ये बहुत ही एग्जैक्ट पोजीशन आपकी लोकेशन जो है वो शेयर करता है। द कॉस्ट ऑफ द रिसीवर इज ड्रॉपिंग, क्योंकि इसकी कॉस्ट इसलिए ड्रॉप हो रही है कि ऑलरेडी सैटेलाइट स्पेस में जा चुके हैं, पूरा जीपीएस का सेटअप वर्किंग कर रहा है, बस इसको अपडेट किया जा रहा है जैसे जैसे इसकी जो रिक्वायरमेंट्स है उसको इंक्रीज किया जाता है। मोर अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल टू कंज्यूमर, अफोर्डेबल है क्योंकि ऑलरेडी आपके पास जो डिवाइसेस मौजूद हैं उन तकरीबन हर डिवाइसेस में इसकी जो एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल है, यानी आपके व्हाट्सएप में आप इसको शेयर कर सकते हैं, आपके मोबाइल फोन्स में भी इसकी शेयरिंग हो सकती है लोकेशन की। डिफरेंट डिवाइसेस जिसमें जीपीएस ट्रैकर्स मौजूद हैं वो आपकी लोकेशंस को शेयर कर सकते हैं। So students, at the end of the lecture, I hope you understand all the concepts of GPS very well. If you have any question, you ask back. So students, at the end of the lesson, I also plan an activity for you, which is do read page number 141, 142 and 143 from your textbook, and then solve the following worksheet with the help of video lesson and with your course book as well, which you can find in attachment. After solving the worksheet, kindly send it back to me. Thank you for attending the video lesson. Take care of yourself. Allah Hafiz.